Good morning, everyone. Welcome to the morning call. We start with technical and derivatives. In yesterday's session, we saw that Nifty has again climbed close to 17,950 level, and Bank Nifty has almost traded close to 39,700. We have been maintaining that Nifty should rally close to 18,000 and Bank Nifty close to 40,000. So even in yesterday's session, when there was a weekly expiry, there was a very long struggle to keep the market on a positive mode. There were range bound kind of momentum, but still the close was quite good. The Nifty was flat and the Bank Nifty was marginally up by 0.5%. So from the derivatives perspective, the longs were added in Nifty futures and short covering was seen in the Bank Nifty. The interesting fact is that the put call ratio, which was at 1.4, has now come to 1.23. So even when the longs are added, the put call ratio is declined. So this is a bit cautious kind of scenario where when the put call ratio declines, there are chances that even the prices may decline over the next couple of minutes over the period of time. So since we are already headed towards the 18,000, we are almost close to those levels. I would suggest that the risk reward ratio for the fresh longs are not very clear at this level. So cautious views advised. There is a chance that there can be some declines can be seen, profit booking can be seen in the Nifty. So in case of any correction, 17,600 can be the probable lower side where the Nifty can come, and 39,000 on the Bank Nifty. So we maintain a little bit cautious view today. There is a probability being a Friday and being a weekend, some profit booking can be seen. Sector specific, IT and auto were the sectors which saw some profit booking. Like IT was anyways it's trading lower. The auto was which had already gained a rally was seeing some profit booking in yesterday's session. So probably today also the auto and IT may see some kind of selling pressure. If I come to the FI data, FIs in the cash for the very first time they are sold close to 1,706 crore. Domestic institutions were the buyer of 470 crores. The interesting factor, this index futures. For the very first time, they are sold in index futures close to 18,000 contracts. And even they were net seller by 1,600 contracts. The long short ratio has declined from 58 to 53. So even the FIs are sold in yesterday's session. Maybe we are at the intermediate top of it's not top, but maybe we have rallied so much the profit booking is coming into action. So that is one of the reasons we are maintaining a cautious view. The call which we are recommending for the day technical call is Jubilant Food. We are recommending buying the range of 610 to 616 with a stop loss of 598 for the target of 643. The derivative call for the day is M&M future in the range of 201 to 202. The stop loss of 196 for the target price of 212. That's all from technical. Over to Bunty sir. Thank you, Brijesh. Good morning, team. As result seasons are over, now we will focus more on the news update. So few updates from my side. Firstly, on the IRCTC. IRCTC plans to leverage the data assets to increase revenue as well as improve customer experience. To this end, the railway PSU has floated a tender for appointing a consultant for digital monetization, which it expects will generate around 1,000 crores in terms of revenue. IRCTC wishes to leverage its data assets and market position to drive strong growth in revenue. It further said, adding that this can be achieved by improving customer experience, expanding the portfolio of products being offered to the customers, and by developing new business lines and partnership. Overall, on the stock, we remain very much positive with a buy rating. Secondly, in Inox PVR, there is some news, or as per media sources, NGO has approached the CCI in July against this Inox and PVR merger. So the proposed merger, if taken up by CCI, could create some hurdles for the merger. So we will keep a watch on these two stocks as the news progresses. Thirdly, on the Wipro.
Wipro has announced that it has won a multi-year deal from UK government agency HM Treasury. As a part of this deal, Wipro will enable the integration of IT services across suppliers and partners, enhancing the user experience across various government bodies and departments. The deal size, however, not been disclosed by Wipro, but if you see currently, Wipro derives around 30% of its revenue from the UK and Europe region and is more focused on increasing its presence in these two countries. This is very much positive development for the company for its future earnings perspective, and we have a target price of 405 rupees on the Wipro. Next is on the Maruti. Maruti has launched the all new version of its small car Alto K10 with a price range of around 3.99 to 5.83 lakh, which is ex showroom price. Will Maruti will continue to focus on all segments, including the entry segment, as it brings more technology and feature-packed products. Company CEO or MD said a large section of customers still prefer hatchbacks despite sales growth of SUVs, and Maruti Suzuki India feels the need to keep the small car segment energized with new products. If you see the Indian passenger vehicle industry almost sold over 11.5 lakh hatchbacks, and out of this, Maruti's market share stood at approximately 68%. So it's a major chunk which Maruti sold in terms of hatchbacks. We are very much positive on the Maruti with a buy rating on the stock as such. Lastly, there is a news that government has hiked windfall profit tax on diesel to rupees 7 per liter from rupees 5. It also brought rupees 2 per liter tax on ATF exports after scrapping it in the last review. Also, tax on domestically produced crude oil cut to rupees 13,000 per ton from rupees 17,750. Because of this news, energy stocks like Reliance and ONGC could be in radar. So keep a watch on these stocks as such. That's it from my side. Over to you, Hitendra. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. We'll see more further updates. Tata Motors has bagged an order of 921 electric buses from Bengaluru Metropolitan Corporation. This would be supplying 12-meter long buses as a part of the tender, and this will occur over a 12 years as per the contract. And they would be supplying their Tata Starbus, which is indigenously developed vehicle with super design and best-in-class features. Yesterday, DGCA said that Indian Airlines has seen a 7.6% sequential drop in domestic passengers. Overall, in the month of July, 97 lakh passengers have traveled, and well, in the month of June, it was 1.05 crores. And overall, if we see from the month of January to July period, 6.69 crores have traveled. And they say that the rainy season is generally a lean period in the aviation sector. Yesterday, CC Switch Mobility has unveiled India's first electric double-decker air conditioned bus. Switch Mobility is a subsidiary of Ashok Leyland, which Ashok Leyland EV division. And Switch Mobility has also replacing the BST's double-decker fleet. And they have also powered a 231 kilowatt capacity battery pack, and they will have a range of 250 kilometers for intercity transport. HAL is also now opening an office in Malaysia. Basically, HAL is now trying to tap their Royal Malaysian Air Force business requirement, that is Su-30 MKM and Hawk upgrades. So they are opening their office, and this would be a positive for HAL. Lupin has received a US FDA nod for their Rufimide tablets to treat seizures, and this is basically in the range of 100 mg, 200 mg, and 400 mg, and they have received an ANDA for that. Spicer has said that they are going to approach to Madras High Court for the withdrawal of the 5 million bank guarantee, which they deposited in the May. Spicer deposited this guarantee on the direction of Madras High Court. And for the Supreme Court hearing is also winding up the case against the company filed with the Credit Suisse. ITC has shown an interest in bidding to develop and manage state-run ITDC's 550-room Ashok Hotel in the heart of capital city Delhi. And they said that the hospital consultant, one whose advisor, is also in favor of them.
JSW Steel said that the Fair Trade Regulator and the CCI has approved the proposal to merge their Granic Special Steel and JSW Ispat into JSW Steel. And this merger deal is also manufacturing of rolling steel products with correction special steel in the business. And CCI has also approved the amalgamation of correction special and JSW Ispat. Federal Bank has, under the expansion drive, has inaugurated 50 new branches across the country. They had opened their branches in the Tamil Nadu region, and overall they have 177 one branches in the state. And bank would also like to enter into Tamil Nadu, Telangana, and Gujarat region. BPCL BPCL is going to invest 450 crores in the NAFTA import storage and dispatch facility in the Haldia in West Bengal. And they are going to implement this Assam gas cracker project also in the northeast. Tata Power has also raised 2,000 crore from BlackRock, a big backed green forest new generics for the Tata Renewable Energy. GMDC has said that they are going to augment their lignite output by 1.5 million ton this year, and this is also as a lignite production to support the energy for the cheaper fuel. Nykaa said that the NYTD brand, Athleisure brand, is going to open its first ever standalone retail physical store in Delhi in Rajouri Garden. And the store has a area of variety products such as sleepwear, athleisure, and lingerie. NHPC has also signed a memorandum with Nepal board and the government of Nepal for their project and development of 750 megawatt West Seti and on the Seti River for the sixth project of 450 megawatts. Stride Pharma said that their wholly owned subsidiary Stride Pharma Global has received an approval from the US health regulator for their generic naproxen sodium soft gel capsule. This is basically used for the treatment of inflammation, and we have received a US FDA for the 220 mg strength also. So that's it from mine, and hand over to Kshitija for more updates. Thank you. थैंक यू एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. फर्स्ट अपडेट जो है वो आईआरसीटीसी के ऊपर है. जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, उन्होंने प्लान किया है कि वो लेवरेज करेंगे डेटा सेट को, जो रेवेन्यू इंक्रीज करने में और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसके लिए इम्प्रूवमेंट होगा. और कंपनी ने बोला है कि जो उनका रेलवे जो पीएसयू है वो फ्लोटेड टेंडर अपॉइंट के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट करेगा जो डिजिटल मोनेटाइजेशन, और इससे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो अराउंड 1000 करोड़ होगा. और आईआरसीटीसी की ये विश है कि वो जो अभी लिवरेज डेटा सेट और मार्केट पोजीशन ड्रिवन जो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उसके कारण रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी होगी. और कंपनी ने और भी बोला है कि वो और फोकस करेंगे उनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करने में, और जो उनका पोर्टफोलियो है, जो प्रोडक्ट्स है, पोर्टफोलियो में जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपांड करेंगे, जो कस्टमर को न्यू बिजनेस इनलाइंस और मोस्टली पार्टनरशिप पे फोकस करेंगे. नेक्स्ट अपडेट है आइनॉक्स और पीवीआर के ऊपर. जो मीडिया सोर्स है उन्होंने बोला है कि एनजीओ है उन्होंने अप्रोच किया है सीसीआई को जुलाई मंथ में, जो आइनॉक्स और पीवीआर का मर्जर है उसके लिए. तो ये जो ये मर्जर है वो सीसीआई ने देखा तो ये एक हर्डल हो सकता है आइनॉक्स और पीवीआर के मर्जर के लिए. नेक्स्ट अपडेट है विप्रो के ऊपर. विप्रो को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिला है यूके गवर्नमेंट एजेंसी से, एचएम ट्रेजरी से. और ये जो डील है वो इंटीग्रेशन मतलब जो आईटी सर्विस है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, बेसिकली सप्लायर्स और पार्टनर्स को प्रोवाइड करेगी, जो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो एनहांस होगा गवर्नमेंट बॉडीज और डिपार्टमेंट्स में. ये जो डील साइज है वो अभी तक विप्रो ने डिस्क्लोज नहीं की है, बट मोस्टली जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 30% यूके और यूरोप रीजन से आता है. तो कंपनी फोकस करेगी जो इनका प्रेजेंस है वो रीजन में वो बढ़ाने के लिए. और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है फ्यूचर हम लोग फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखें तो करंटली ये स्टॉक के ऊपर हमारा होल्ड रेटिंग है और जो टारगेट प्राइस है वो 405 है, बट ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से है. मारुति ने कल एक ऑल न्यू वर्जन स्मॉल कार है ऑल्टो K10 वो लॉन्च किया, और उसकी जो प्राइस रेंज है वो 3.9 से लेके 5.83 लाख है. ये एक शोरूम प्राइस है.
और अभी कंपनी फोकस कर रही है ऑल सेगमेंट्स में, उनकी जो एंट्री सेगमेंट्स है और इसके अलावा मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन और फीचर ड्रिवन प्रोडक्ट्स ला रही है। इवन कंपनी की जो सीईओ और एमडी है उन्होंने बोला है कि लार्ज सेक्शन जो कस्टमर स्टिल है वो अभी भी हैचबैक को प्रेफर करते हैं। मतलब हम लोग बहुत ज्यादा एसयूवी में ग्रोथ देखते हैं, उसके कारण मतलब उसके बावजूद भी। तो मारुति ने बोला है कि वो स्मॉल कार सेगमेंट में ज्यादा फोकस या बोलते हैं ना उसकी जरूरत है। तो और इंडियन पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री है वो अभी तक 11.5 लाख हैचबैक सोल्ड किया हुआ है, उसमें मारुति के जो शेयर्स है वो अभी स्टूड है 68% पे। नेक्स्ट अपडेट है जो एनर्जी स्टॉक्स लाइक ऑयल विंड फ्री टैक्स के ऊपर, जो उसमें रिलायंस आता है, ओएनजीसी और अदर ऑयल इंडियन मेकिंग कंपनीज है वो। तो गवर्नमेंट ने विंडफॉल जो प्रॉफिट टैक्स है वो हाई किया है डीजल पे 7 रुपीज से पर लीटर, जो पहले 5 रुपए था। और इवन कंपनी ने इवन गवर्नमेंट ने 2 पर लीटर टैक्स एटीएफ एक्सपोर्ट जो है उस पे ऊपर स्क्रैपिंग है उसके ऊपर इंक्रीज किया है। और जो टैक्स है डोमेस्टिकली जो क्रूड ऑयल है प्रोड्यूस करती है उसके ऊपर कट किया है 13,000 पर टन, जो पहले 17,750 था। तो ये जो ऑयल मेकिंग कंपनीज है और रिलायंस ओएनजीसी उसके ऊपर आज आप इम्पैक्ट देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है स्टार्ट फार्मा साइंस के ऊपर। तो कंपनी को एक यूएस हेल्थ रेगुलेटर से अप्रूवल मिला है जो जेनरिक नैप्रोक्सिन सोडियम सॉफ्ट जेल कैप्सूल के लिए। जो ये जेनरिक है वो यूज होता है पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है टाटा पावर के ऊपर। जो कंपनी है वो 2000 करोड़ रेज करेंगी 8.36 करोड़ इक्विटी शेयर्स ब्लैक रॉक और जो बैक ग्रीन फॉरेस्ट न्यू इंजन है वहां से। नेक्स्ट अपडेट है फेडरल बैंक है वो एक्सपांशन करने वाली है 15 न्यू ब्रांचेस अक्रॉस ओवरऑल कंट्री में, जो केरला बेस्ड रहेगी। ये एक अपडेट कंपनी ने दिया है। और इवन 15 और 7 नई ब्रांचेस है वो तमिलनाडु में होगी। ओवरऑल जो उनका प्रेजेंस है वो 171 ब्रांचेस हो गए वो स्टेट में। और कंपनी ओवरऑल फोकस करने वाली है कंटिन्यू टेरिटरीज है जो तमिलनाडु तेलंगाना और गुजरात में। नेक्स्ट अपडेट है जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर। सीसीआई जो है उन्होंने अप्रूवल दिया है जो मर्जर है क्रिसेंट स्पेशल स्टील एंड जीएसडब्ल्यू इस्पात को इनटू जीएसडब्ल्यू स्टील में। तो ये ऑलरेडी मई में ही जीएसडब्ल्यू स्टील ने अनाउंस किया था ये मर्जर डील के बारे में। तो जीएसडब्ल्यू स्टील एंड जीएसडब्ल्यू इस्पात जो ये दोनों कंपनियां वो मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं स्टील प्रोडक्ट्स। बावजूद जो क्रिसेंट स्पेशल स्टील कंपनी है वो बिजनेस करती है, उसका जो होल्डिंग स्टेटमेंट है उनके बिजनेस में वो होल्ड करती है। तो सीसीआई ने कल अप्रूवल दे दिया है उनके जो अमालगेशन है क्रिसेंट स्पेशल स्टील और जीएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स को, जो मर्जर होगा जीएसडब्ल्यू स्टील में। तो नेक्स्ट अपडेट है बीपीसीएल के ऊपर। जो बीपीसीएल है उनको वो 450 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं नाफ्ता इंपोर्ट शॉर्टेज एंड डिस्पैच फैसिलिटी में, जो हल्दिया पोर्ट में है और वेस्ट बंगाल में है। और बीपीसीएल इम्प्लीमेंट करेंगी ये जो प्रेस्टिजियस आसाम ग्रैग प्रोजेक्ट को, और ये लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट में। और कंपनी ने हैंडओवर किया है ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट का है वो कोलकाता पोर्ट को, जो जाना जाता है श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से। नेक्स्ट अपडेट है आईटीसी के ऊपर। आईटीसी ने इंटरेस्ट दिखाया है कि जो डेवलपर मैनेज स्टेट रन है इंडिया टूरिज्म कॉर्पोरेशन उनको, कि वो 550 रूम्स द अशोक होटल है वो हार्ट ऑफ कैपिटल सिटी में डेवलप करेंगे। और ये हॉस्पिटलिटी जो कंसल्टेंट है उसमें एडवाइजर रहेंगी एक कंपनी। नेक्स्ट अपडेट है स्पाइसजेट के ऊपर। कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट को अप्रोच किया है जो विड्रॉ करेगी $5 मिलियन बैंक गारंटी जो डिपॉजिट किया था, जो मई में ही ऑलरेडी उन्होंने फाइल किया था। और बेसिकली स्पाइसजेट और क्रेडिट सूज के ऊपर एक डिस्प्यूट हो चुका है, उसके कारण ये अपडेट है। ओएनजीसी नेक्स्ट अपडेट है लुपिन के ऊपर। लुपिन को एक यूएसएफडीए अप्रूवल मिला है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन का। जो रुफिन माई टैबलेट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 100 mg 200 mg और 400 mg है। नेक्स्ट अपडेट है जो
ईवी डिवीजन है अशोक लेलैंड का, स्विच मोबिलिटी, उन्होंने इंडिया में फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर अनवील की है। और ये जो बस है डबल डेकर वो BST, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के अंडर में आएगी। और ये जो इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस है वो पावर्ड रहेगी 231 किलो वेगा हैट से, उसकी कैपेसिटी रहेगी बैटरी पैक का। और ये ओवरऑल डुअल गन चार्जिंग सिस्टम रहेगा। और कंपनी की जो रेंज रहेगी, मतलब वो जो बस की रेंज रहेगी वो 250 किलोमीटर जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो सकती है। देन नेक्स्ट अपडेट है जो इंडिया का एयरलाइन डेटा है उसके ऊपर। कल डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन DGCA ने बोला कि ओवरऑल 97 लाख डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैवल हुए हैं जुलाई में, ये साल में। जो नंबर है वो 7.6% से लोअर आया है कंपेयर टू लास्ट मंथ से। लास्ट मंथ जून मंथ का जो नंबर था वो 1.05 करोड़ था। ओवरऑल 6.69 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया था डोमेस्टिक फ्लाइट जनवरी से लेके जुलाई पीरियड में। तो रेनी सीजन में थोड़ा लीन ही रहता है एविएशन सेक्टर। लास्ट अपडेट है टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स को 921 इलेक्ट्रिक बस का बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से ऑर्डर मिला है, जो सप्लाई और ऑपरेट करेंगी ये इलेक्ट्रिक बस। और ये एक लार्ज टेंडर है जो कंपनी ने अनाउंस किया है। और ये ओवरऑल उसका जो पीरियड रहेगा वो 12 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द कॉन कॉल। हैव अ नाइस डे।